through translator, your language code will be converted into the machine code and you can interact with the machine. So till that point we have discussed in last class. याद है ना सबको इतना किया था? And I think I Yes, have ma'am. given example that I have given as an homework that you need to find 5 system software and 5 application software names. दिया था ऐसा कुछ टास्क? Ma'am, some new technologies task Yes, given. yes, वो भी दिया था. ढूंढा किसी ने? Anything want to share? Ma'am, Yes, ma'am. Sorry? quantum computer system. Edge क्या होता है वो? computing. What is quantum computer? Uh, quan- कैसे यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है? Anybody is having idea about it? It's Please. based on nanotechnology. Yes. For which purpose it will be there? See, if you find something new, that you need to know what actually it is, for which purpose. See, the things which we are discussing, it's sometimes that maybe happen that I also don't know that thing. That is possible. कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी है तो हर एक को हर एक चीज पता हो ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं पता होगा. So at least we are discussing here, so all can have some idea about new things. So this is a group discussion only. तो कुछ नेक्स्ट टाइम आपको उसकी डिटेल जान के लानी है. व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क. टेक्निकली नहीं, बट क्या है, किस पर्पस के लिए वो इन्वेंट हुआ, वो. ओके yes, ma'am. ओके. एनीबडी एल्स वांट टू शेयर हियर एनीथिंग? Tesla's auto driving. 5th generation. हाँ, नाउ व्हाट इज दिस फिफ्थ जनरेशन? व्हाट इज दिस 4G 5G 3G? वो क्या है सब कुछ? A broadband cellular networks. It is a cellular network. So which are the benefits of 5G when we reach to the 5G technology? What are the new things we get? क्या फायदा होगा उसका? It's fast. Predicted to have more than 1.7 billion subscription. Beneficial for the cloud storage. Yes. Then Faster than 4G. obviously faster is the main thing. Then you can communicate and so many backend things will become faster for the network purpose. वो भी टेक्निकली आपको पता नहीं चलेगा, बट बेसिकली व्हेन यू यूज, इफ यू कंपेयर विथ 2G और 3G विथ 4G, तो क्या डिफरेंस होता है? वो तो हमने यूज किया ही है ऑलरेडी. 3G टेक्नोलॉजी के बाद 4G जब आई तो उसमें क्या डिफरेंस आया था? मैम सबसे पहले स्पीड डिफरेंस. Yes, speed is the one that is Speed, technology. टेक्नोलॉजी में क्या मतलब, what is the thing behind it? New features. Okay, so ये भी आपको ढूंढ के लाना है. This is a open assignment for all the students that you need to find what are the new things you will get in 5G technology when it is there. 5G अभी आने ही वाली है and you all know and we are all using smartphone, और उसके लिए तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हाउ इट वर्क. ओके, we'll discuss it in next class. So like right now we will move towards our syllabus now. Now first thing I want to add here, till now the points which we have discussed, they all are generalized points. That means at least you should know what are the facts and figures right now in IT industry, and to learn or to reach at that extent you need to start learning from where. So from base, in base you need to know what is the role of computer, what actually computer is and how it work.
उसका लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमने देखी टिल नाउ. उसमें we include programs also and programming language also. So these all are the prerequisite things that at least you should know it. तो अभी हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जाए दैट इन आवर सिलेबस स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग यार. You all have to join meeting sharp at 11. Last time I am telling this. I will not allow after 11:05 anyone. 11:05 के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी. लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको ज्वाइन होना है तो हो जाना 11 मैक्सिमम टिल 11:05. उसके बाद आई विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम because this thing will distract me throughout the session. So let's quickly go through with our actual subject point of view. The lecture, the subject name is LDP. Now do you know the full form of this LDP subject? Anyone? क्या पढ़ने वाले हो पता है? Logic Logic development development programming. Logic development programming. That means any programming language. So right now in this you have a C language. So that is a basic programming language that you compulsory need to know. मतलब वो आना जरूरी है बिकॉज इट इज अ बेसिक थिंग. उसके अलावा आगे उसके कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता हाउ एक्चुअली प्रोग्राम विल वर्क एंड हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है मतलब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. प्रोग्राम हम आउटपुट कोई पर्पस के लिए लिखते हैं तो वो हमारा एंड रिजल्ट है, बट वो कैसे लिखना है दैट एटलीस्ट यू शुड नो. आई हैव ऑलरेडी कंपेयर इट विथ योर इंग्लिश ग्रामर. That if you are knowing grammar of any language, then and then you can make your or you can frame your sentence. So same way here you need to know the basic concept of any programming language, then and then you can write your program properly. और जो भी हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए. मतलब जब आप ये अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको उसका मीनिंग when you write in program or code anything. So you should have idea about each and every line which you have written in the program. वो आना जरूरी है. So I'll show you the syllabus first. Wait. In this I'll again add here in your semester 1 LDP1 is your subject name. That means the whole C content will be bifurcated in 2 semester here. Semester 1 में आपको आधा C पढ़ाया जाएगा and half of the rest of the topics will be covered in LDP2. So that will be there in your semester 2. And these both the things, both the subjects I will take in your classes. मतलब C, अभी LDP1 and LDP2 both I will continue in your both the semester. So we are not, right now we are focusing on LDP1 only. So in that, if you are LDP1 is clear, then you are getting the concept of LDP2. मतलब जो basic चीज है वो आप एक बार 2 काफी easy रहेगा. Some concepts are new in that also, but when you learn 1 clearly, so root things will be covered in that in this semester only. So I'll show you the syllabus. Wait. If you want to find the syllabus of your subject, you can find it in on our website also. Website पे मिल जाएगा ये syllabus आपको. अभी सिर्फ मैं उसका थोड़ा सा overview दे दूँ. देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here, this is the syllabus of LDP1. Now, here you can see the objective and prerequisite. See, in every syllabus you have seen the prerequisite. Now, what is prerequisite? मतलब ये सीखने के लिए आपको आगे क्या आना चाहिए? So here nothing is required. So आपको ये बेसिक से शुरू करना हो, अच्छे से प्रोग्रामिंग लर्न करनी हो, तो ये पहले सीखना जरूरी है. No other base thing is required for this. तो prerequisite यहाँ पे कुछ भी नहीं. Now, what is the objective?
So the course will create basic fundamental of programming and build logical concept to create an application. Logic is a very important term. Here इसीलिए सब्जेक्ट का नाम दिया है लॉजिक डेवलपमेंट. मतलब logic and how to write program. When these two things mix together, मतलब प्रोग्राम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है वो आपका लॉजिक हुआ, और सॉल्यूशन प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब वो जो सॉल्यूशन आपने ढूंढा वो प्रोग्राम थ्रू कैसे लिखते हैं. फॉर दैट यू नीड टू लर्न दिस लैंग्वेज. सो जब वो दोनों चीज क्लब हो जाए, यू कैन कोड एनीथिंग विच यू वांट टू. वो मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी कर सकते हो. नाउ इन नेक्स्ट दिस you can see the teaching and examination scheme of this, where you have lecture, tutorial and practicals. So देखो यहाँ पे तीन, you have 3 lectures per week. Right now we are on in initial phase, so after 1 or 2 week you will get this whole sequence. अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए अभी एक ही lecture है. Maybe probably you will get offline teaching also very soon. So उसमें you have 3 lectures per week and practical session of 2 hours. और थियोरी और प्रैक्टिकल का वेटेज भी कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल में होगा. 70% ऑफ थियोरी एंड देयर इज नो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम, बट व्हेन यू हैव इंटरनल यू हैव 30-50. So that will be covered later on. We are not going in that right now. Now, course content is very important. So you will have total 4 units in this syllabus. देखो, unit 1, 2, 3, 4. And in this unit 1 to 4, that all concept which we are, unit 4 is little bit after unit 3 and half. मतलब unit 3 का जब ये half statement half complete होगा तब तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, ऐसा आप बोल सकते हैं. मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए जो भी जरूरतें है कि आपको ये आना चाहिए टू राइट अ प्रोग्राम, वो सारा आपको यूनिट 1 और 2 में मिल जाएगा. अगर यूनिट 1 2 क्लियरली पता चल जाएगा. यूनिट 1 इज ऑल्सो वेरी थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओनली मेन फोकस इज योर यूनिट नंबर 2. जो 2 आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो यू कैन राइट और क्रिएट योर बेसिक प्रोग्राम विथ all required rules and regulation. And you from half of unit 3 and 4 you will get a core concepts of C, that is control structures and decision making structures. So वो आपका C का basic यहाँ से शुरू होगा. And you can see the practicals also. देखो, we have the list of practicals that you have to perform. That here only 13 practicals will be given, but I will give you more practicals to practice. And first I have already mentioned that if you want to purchase any book for this language, this reference book 1 is the best book for you. That author name is NCC by E. Bala Gurusamy. वो बहुत ही कॉमन और सालों से वही बुक रेकमेंड होती है फॉर सी लैंग्वेज. इज द बेस्ट बुक. So this is all about your syllabus. Anything want to ask here regarding syllabus and content? Anyone? Okay, so shall we go ahead? Ma'am, books. Yes, ma'am. Sorry? Books, ma'am. बुक्स मैंने बताया ना, अभी पहली बुक ही, अभी तो जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट टू बाय दैट एनसीसी ही आपको लानी है अगर लेनी है तो. Okay. So today we'll go with some of the topic. हमने लैंग्वेजेस वी हैव सीन. तो यूनिट 1 का एक पार्ट हमने वो देख लिया है, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर यूनिट 1 टॉपिक. So we have already started that, and today we'll see the block diagram of computer. अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं जा रहे. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, what is the actual scene or what is the actual things behind your computer, how they work, that we'll discuss today. So wait, I'm sharing the screen once again.
1 second. First topic is block diagram of computer. Now, what is block diagram first? So, block diagram is basically computer gives you the pictorial representation of a computer that how it work inside. तो मैंने बताया कि हमें जो सिस्टम दिख रहा है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, तो उसके पीछे what is the behind process which is running when you do any task through computer, वो कैसे होती है, उसका सिर्फ फ्लो. ब्लॉक डायग्राम shows only a flow of your system and which are the things which is included in your computer that we are discussing. So basically block diagram of computer gives you the pictorial representation of computer. मतलब कंप्यूटर का pictorial format ऐसा हम बता सकते हैं. This is a block diagram. देखो. Now please see this very carefully. हमने devices की बात की थी शायद आपको, if you remember that इनपुट आउटपुट हार्डवेयर में काफी सारी चीजें होती है. कंप्यूटर व्हेन यू हैव योर डेस्कटॉप सिस्टम एट योर होम, सो हाउ मेनी डिवाइसेस आर देयर इन दैट सिस्टम? Keyboard, mouse, printer, speaker, monitor. Still one thing is left. CPU, processor. Yes, which is the main one. So इतनी चीजें होती है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, if you have printer, if you have, it is an optional thing, but at least you require keyboard, mouse and CPU and monitor. ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा. So what actually this hardware component will do? So some of the component will use as an input purpose, some of for output purpose and some for logical development purpose only. मतलब processing part के लिए use होता है. So here you can see वो जो पार्ट्स है वो क्या है. सो फर्स्ट यू व्हेन यू से दिस इनपुट, सो इनपुट इज कनेक्टेड विथ योर मेमोरी ऑलवेज. तो मतलब कीबोर्ड या माउस से जब आप इनपुट डालते हो तो वो कहीं पे मेमोरी में स्टोर होता है. लाइक इफ आई प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, लाइक आई विल प्रेस एंटर, तो जो एंटर जब आप प्रेस करते हो तो वो डेटा अंदर जाता है एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन सम मेमोरी. मतलब क्या प्रेस किया वो उसकी डिटेल, for which purpose you press, that everything will be handled when you write it in your program. मतलब हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें बैकएंड में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. So when you have an input, so first when use an input and at the end, मैं आउटपुट पहले ले लेती हूँ कि हमने कोई भी प्रोसेस के लिए कुछ भी डाला. लाइक इफ आई कंसिडर, हम कंप्यूटर की जगह कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर व्हाट विल डू व्हेन यू आर एंटरिंग 2 + 3, मतलब आपने इनपुट डाला और वो आपको रिजल्ट में कुछ आउटपुट देगा, दैट इज 5. तो वो प्रोसेस बीच का पार्ट हमने स्किप कर दिया. तो इनपुट डाला और आउटपुट यू विल गेट, तो दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हैंडलिंग. वो दोनों अलग अलग चीजें. मतलब डिस्प्ले स्क्रीन होती है जैसे यहाँ पे मॉनिटर होता है, तो दैट विल शो यू द आउटपुट. इनपुट विल बी टेकन बाय माउस एंड कीबोर्ड. ओके. So once you get input or you insert your value as an input, that will be inserted in the main memory. Now the process, अगर मैं बात करूँ 2 + 3 की, तो मुझे क्या करना है, that I have already defined. मतलब जब भी मैंने डाला 2 + 3, मतलब हमने वो प्रोसेस की डिटेल डाल दी. that plus means addition, और किसका एडिशन, प्लस के आगे और पीछे जो भी वैल्यू है उसका एडिशन. तो वो प्रोसेस भी हमने डाल दी इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम. मतलब कैलकुलेटर में आप डाल रहे हो तो वो प्रोग्राम नहीं है, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग थ्रू ये चीज करनी है, सो यू नीड टू राइट एवरीथिंग
that you what you need to perform. आपको क्या करना है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो वो कैसे होगा? जब कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी तो उसके ऊपर आपको क्या प्रोसेस करनी है, दैट विल बी हैंडल्ड थ्रू सीपीयू. मतलब सीपीयू ये सारी प्रोसेस करेगा. तो देखो, इन सीपीयू वी हैव बाइफरगेशन. सेंटर में जो यूनिट है उसमें दो पार्ट दिए हैं मेन मेमोरी के ऊपर, कंट्रोल एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. So CPU is bifurcated in two parts: control unit and arithmetic and logic unit. अभी जो मैंने बताया, like when I press any key, तो की प्रेस होने पर कौन सी की प्रेस हुई, उसका डेटा कहाँ पे मेमोरी में जाने देना है और किस पोजीशन पे वो स्टोर हुआ है. और व्हेन यू प्रेस 2+3 तो वो प्लस साइन है, उसको डेटा कहाँ भेजना है. आफ्टर एडिशन यू विल गेट सम न्यू नंबर, तो जो नया आंसर मिलेगा उसको कहीं पे स्टोर तो करना ही पड़ेगा. देन एंड देन यू कैन डिस्प्ले. तो वो जो मेंटेनेंस होता है, कंट्रोलिंग द प्रोसेस फ्लो, दैट विल बी हैंडल्ड बाय कंट्रोल यूनिट. कैलकुलेशन 2+5 करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. मतलब 2+5 का रिजल्ट क्या आएगा, दैट टास्क विल बी हैंडल्ड बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. मतलब आपने जो प्रोसेस लिखा है उसके बेस पर वो कैलकुलेशन करके दे देगा, बट उसके लिए जो पहले की और पीछे की रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी हैंडल्ड बाय कंट्रोल यूनिट. सो वंस आई मूव दिस थिंग, तो ये देखो, पार्ट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम इज सीपीयू विच इज बाइफरकेटेड इन एएलयू एंड सीयू. इनपुट आउटपुट यूनिट, देन मेमोरी यूनिट, दिस स्टोरेज यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. वो क्या है, लेट्स सी वन बाय वन. मैंने वैसे तो काफी कुछ बता दिया. आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? पता चल रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, if you have any query you can interrupt and ask. या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. So the processor unit or process unit, you can say the central processing unit. CPU का फुल फॉर्म ये है. So it is a brain of a computer. हमें सबको पता है कि CPU क्या है, वो हमारा दिमाग है. Like we have brain, human have the brain. So CPU is the brain of a computer. All major calculation and comparisons are made inside the CPU. And it is also responsible for activation and controlling the operation of other unit. मतलब कुछ भी इनपुट से कुछ आया तो कैसे वहां पे उसको हैंडल करना है, कहाँ पे ले जाना है, किस मेमोरी कितनी मेमोरी देनी है, so that everything will be handled by this control unit. And this unit consists of two major component, ALU and CU. इसका दोनों का bifurcation है. देखो, arithmetic logic unit perform all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. तो हमने जो लिखा ना 2+5, उसका आंसर, वो जो प्रोसेस है वो कौन हैंडल करेगा? ALU. And the control unit of CPU controls the entire operation of a computer. But उसको प्रोसेस करने के लिए जो क्या जरूरी चीजें हैं, इनपुट क्या कहाँ से लाना है, मेमोरी कैसे देनी, that will be handled by CU. So CU fetches the instruction from the memory, decode the instruction, interpret the instruction to know what the tasks are to be performed, and send suitable control signals to the other component of a components to perform necessary steps to execute the instruction. So getting CPU का actual work, it will be bifurcated in two parts. Is there any query in this particular point? CPU हमने सिर्फ देखा अभी. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now here it is input and output unit. मतलब जो फर्स्ट और लास्ट था साइड का सेक्शन, वो यूनिट क्यों उसको दिया गया है? वो बेसिकली दे आर हैंडलिंग डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस को हैंडल करने के लिए इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने के लिए आउटपुट यूनिट होता है फॉर प्रोसेसिंग पर्पस. So the input-output unit consists of devices used to transmit information between external world to the computer memory. जो मैंने बताया ना, कीबोर्ड से की प्रेस, तो जब आप ये प्रोसेस करते हो ना तो वो एक इनपुट यूनिट में स्टोर होता है और थ्रू विच it will be go
forward for the process. So the information fed through the input unit is stored in computer memory for processing, जो भी मैंने बताया वही स्टेटमेंट है. And the final result stores in memory can be recorded to display of output. मतलब इनपुट में जो दिया फिर वो सीपीयू में गया, सीपीयू में प्रोसेस करके रख दी, वो मेमोरी से वो फैच करके आपको मॉनिटर पे जब वो दिखा रहा है, that will be handled by output unit. So getting input and output का difference. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ideal flow इतना ही होगा. In any system you have input, process, output. Process will be any. Process में कुछ भी हो सकता है. But the flow is like this only. आप उसको input ही नहीं दोगे तो process कैसे होगी? That is very very important. Now other than this you have memory. मतलब ये सारे तीन bifurcation तो हो गए, but memory के बिना कुछ नहीं चलता. So memory unit is an essential component of digital computer and it is where all intermediate and find result are stored. मतलब intermediate और result, ये क्यों, ये दोनों का क्यों bifurcation दो बार क्यों लिखा है? Intermediate data and result, इसमें क्या difference होगा? Anyone want to add here anything? Intermediate is unprocessed data. Sorry? Intermediate is unprocessed data. Yes, unprocessed data मतलब yes, you can say it is right that अगर आपने कुछ डाला वैल्यू में, कीबोर्ड से कुछ वैल्यू डाली तो वो कहीं पे स्टोर तो करना ही होगा ना. So it is not your end result. That is called intermediate data. और उसके बाद वो डेटा पे प्रोसेस होके you can have a result. तो वो भी स्टोर तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप उसको बता सकते हो कि इस जगह पे ये स्टोर डेटा है, वो आपका आउटपुट है. So the data read from the main storage or an input unit are transferred to the computer memory where they are available for processing. And this memory unit is also is used to hold the instruction to be executed and data to be processes. मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है उसको भी कहीं पे होल्ड तो करना ही होगा, तो उसकी मेमोरी भी यहाँ पे असाइन होती है. So memory unit, then disk storage. Now what is this? So data and instruction entered to the computer system through input device have to be stored inside a computer before actual processing start. मतलब हमने हमारा पर्पस है कि I need to do 2 plus 3. But वो 2 plus 3 को input करने के लिए you need to write some rules when you write a program. तो वो rules लिखे उसके लिए that you require some space to store that rules or coding step. So two types of storage units are, मतलब उसमें भी दो कैटेगरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. Primary memory has direct link with input and output unit and it stores the input data and calculation result. मतलब हमने 2 plus 5 जो करना था तो 2 और 5 और उसके साथ प्लस वो स्टोर करेगा इनपुट यूनिट, और कैलकुलेट उसके बाद प्रोसेस होके यू विल गेट सम रिजल्ट, तो वो रिजल्ट भी स्टोर करेगा. सो दैट all type of that processing relevant storage will be stored in primary storage. And what is secondary storage? The primary storage is not able to store data permanently for the future use. मतलब हम जो डेटा हम कंप्यूटर में जो फाइल सेव करते हैं, so that will be permanent storage purpose. So वो that is called secondary storage unit. वो कोई भी प्रोसेस के लिए, सी मेमोरी दो टाइप की होगी. हमें प्रोसेस के लिए कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आप लाइक रफ वर्क करने के लिए आपको कोई स्पेस चाहिए, तो वंस यू डन इट तो दैट विल बी फ्री. मतलब वो स्पेस अभी अगर आपने एक बार प्रोसेस कर दी वो रफ वर्क की, जो एक पेज में आपने किया रफ वर्क फॉर टू कैलकुलेट अ मल्टीप्लिकेशन, तो रफ वर्क एक बार कर दिया फिर आपको उसकी जरूरत नहीं, तो वो स्पेस हम फिर से रिमूव कर दे. मतलब वो जो डेटा लिखा है वो उसको हम erase कर दे, so that memory is available there for another purpose also. But secondary storage क्या है कि जो आपको permanently long term के लिए सेव करना है डेटा, like the files and folders which we create for our purpose, so that fall in this secondary storage unit category. So it is called auxiliary storage also. Secondary storage को auxiliary भी बोल सकते हैं. So are you all getting?
डिस्क स्टोरेज यूनिट, Yes, ma'am. Yes, यहाँ पे किसी को डाउट? Yes, ma'am. Okay, so this is all about block diagram of computer. इतना ही था. In this computer you have a block diagram. हमने इसके बाद वाला compiler interpreter already देख लिया है, so we are not going again in that. So in today's session, if you want to ask anything, that what we have discussed, we have seen the syllabus of our subject, and along with that, the simple computer visualization, you can say. It is called block diagram of computer system that we have discussed. अभी आपको यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. अभी ऐसा लग रहा है कि that we are now in the world of computer. ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ नया, मतलब कुछ अलग डायरेक्शन में पढ़ाई शुरू हुई है. Yes. थोड़ा बहुत. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we are not going further in any topic point of view, but let's discuss some new things that who will remind me what are the software types. तो मैंने बताया था orally last class में. How many types of softwares are there? याद है किसी को? System software. application software, Good. Yes, these two categories are there, system and application. Now system software मतलब कौन से software? Operating system. Windows, Linux. Ubuntu. iOS. Yes, any operating system. Yeah. Any operating system, or the you can say the any software which is used to run your hardware, that is called system software. मेन पर्पस होता है हार्डवेयर रन करने के लिए या हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन थ्रू जो प्रोसेस होती है. फॉर दैट पर्पस जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए, दैट इज फॉल इन सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ कंपाइलर इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट हार्डवेयर, so it is also fall in the system software category because वो डिफाइंड है. कंपाइलर का टास्क डिफाइन है कि वो क्या करेगा. आपने जो इंस्ट्रक्शन दी, it will convert your instruction into the machine language, और इंटरप्रेटर वो सारा वही टास्क करेगा. So that also fall in that category. An application software which we are running or using everywhere, majorly software. Yes, that is task oriented software और a purpose oriented. किसी हर एक एप्लीकेशन का एक यूनिक फीचर होता है, तो वो फीचर अगर आपको यूज करना है, लाइक टू रीड अ न्यूज, तो हम न्यूज की कोई ऐप डालते हैं, सो दैट इज एप्लीकेशन फॉर न्यूज रीडिंग ओनली. सो उसका एक ही टास्क है, इट विल फेच यू द डिफरेंट न्यूज. अगर आप गेम खेल रहे हो तो वो एंटरटेनमेंट पर्पस का ही टास्क है उसका. And if you take consider the WhatsApp, so social media. So social media से when you can communicate with the people. So task is fixed. So this type of software fall in application software category. ये रिकॉल करवा रही हूँ, जो जिनको याद नहीं था उनके लिए रिपीटेशन हो रहा है. So getting all of you. मैम वो टास्क क्या था? Sorry. होमवर्क में दिया था ना आपने? वही दिया था कि you need to write five software name, 5 system software and 5 application software names that you need to find. और दूसरा क्या था, किसी ने बोला था क्वांटम कंप्यूटर. व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर, वो आपको ढूंढ के लाना है, वो क्या है एक्चुअली. Wait, I'll share attendance link. Don't leave the meeting. काफी लोग लीव कर रहे हैं. मजा आ रहा है सबको? एटलीस्ट वो बता दो फ्रेंकली, एंड यू कैन गिव राइट फीडबैक. या मैम. yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ऑफलाइन क्लासेस कब चालू होने वाली है?
वेरी सून यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन, बट अभी एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, बट जल्दी हो जाएगा. मैम आज का टास्क क्या था? A 1 minute. I have shared the link for the attendance. एक बार देख लो and fill up your attendance of today's session within 5 minutes. The link is open for will be open for 5 minutes only. उसके बाद वो close हो जाएगी. सबसे चालू होगी. Sorry, ऑफलाइन कॉलेज सबसे चालू होगी. no idea. I do not have the idea, but very soon you will have offline sessions. हो जाएगा जल्दी. फाइनल प्रोसेस हो जाता है, मतलब probably after 2 week you will get tentative after 2 week हो मैं जाएगा. पिछले वीक मुझे बी डिवीजन का लिंक मिला था, अभी ए डिवीजन का मिला है, तो अटेंडेंस में एक का डालू क्या बी का? आप कौन सी डिवीजन में हो? पिछले वीक मुझे बी डिवीजन का लिंक मिला था, इस अरे वीक लिंक नहीं, बट आपको आपका डिवीजन तो पता ही होना चाहिए ना. नहीं मैम, वो मेल से आता है ना डिवीजन, उसमें पिछले वीक बी का था, अभी इस आपको वीक जो ए का पता है. है, अभी